हेलो एवरीवन एबे आमे देखिबा टी टेस्ट। A t test is used to compare the mean scores obtained by two groups on a single variable. T test केतेबेले यूज होची to compare the mean scores जेतेबेले गोटे सिंगल वेरिएबल अछि सिंगल वेरिएबल and two groups two groups सिंगल वेरिएबल अछि आउ तांको मानकर मीन स्कोर ए दी जन को भितर कंपैरिजन करा हबो सेतबेले टी टेस्ट को यूज करा होची। It is also used when F ratio in ANOVA is found to be significant and the researcher wants to compare the mean scores of different groups included in the ANOVA. It can also be used to compare the mean academic achievement of two groups जेमती कि boys and girls तांकर mean academic achievement कौन रही experimental and control group गोटे रहिला गोटे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रहिला। द टी टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1908 बाय विलियम सिली गोसेट। So the assumptions on which the t test is used are data are normally distributed normal distribution, then equality of variance which can be tested by using the F test or the more robust Levens test. Basically amara F test ही use हुए then samples may be independent or dependent depending on the hypothesis and the type of samples. Independent है परिवे बा dependent है परिवे depending on the hypothesis and type of sample. जेमती कि inexperienced researcher अच्छी तार experience किछि नहीं. The most difficult issue is upon whether the sample are independent or dependent. से केमी जानिबो independent samples are usually two randomly selected groups unrelated to each other such as boys and girls or private aided and private unaided schools in a causal comparative research. जोटा कि ऑलरेडी आमे बेस क्लियर कर सारचंदी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल रो कोन हैला से माने डिपेंड तांको भितरे किछि गोटे कोन मैच रहइबो बा कंपैरिजन बा किछि गोटे रिलेशनशिप रहइबो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भितरे कोन रहइबो रैंडमली सिलेक्टेड हेतिबे एंड अनरिलेटेड हेतिबे। बुझियला अनरिलेटेड एंड रैंडमली सिलेक्टेड जोडा को ऑलरेडी आमे डिस्कस कर सारचंदी। देन आमे देखिबा टाइप ऑफ टी टेस्ट। टाइप्स है गोटे इंडिपेंडेंट वन सैंपल टी टेस्ट आ गोटे है इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट। देन बेसिकली है इंडिपेंडेंट आ गोटे हो नॉन इंडिपेंडेंट और जहाँ को आम कहे डिपेंडेंट नॉन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। एटा टू ग्रुप्स वन है इंडिपेंडेंट सैंपल आ गोटे है नॉन इंडिपेंडेंट सैंपल बा डिपेंडेंट बोली भी कहि परिबा डिपेंडेंट। बुझियला। तो एबे आमे देखिबा इंडिपेंडेंट वन सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल को पुणी डिवाइड कराई इंडिपेंडेंट वन सैंपल इंडिपेंडेंट टू सैंपल। एबे देखिबा इंडिपेंडेंट वन सैंपल टी टेस्ट। तो वन सैंपल टी टेस्ट रे कोन होची गोटे सैंपल ऑलरेडी अच्छी बा नोन रेफरेंस मीन गोटे अच्छी नोन रेफरेंस मीन ऑलरेडी गोटे अच्छी। देन आम सैंपल रो नेकी न्यू सैंपल नेकी तार मीन बाहर करूचंती।
तो ये आम ने कौन द रिसर्चर फाइंड्स दैट द मीन एकेडमिक अचीवमेंट द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स इज 50 जोटा कि नोन रेफरेंस मीन अच्छी आमर 50 ऑलरेडी नोन अच्छी with a standard deviation of 12. If the researcher wants to know whether this year's students academic achievement in mathematics is typical, he takes known reference mean as 50 जोटा कि known reference mean को 50 बोली धरची which is the population mean and s equal to 12 where s is the population standard deviation or standard deviation of collective data जोटा कि हमर अछि 12. Suppose n equal to 36 n हला number of cases in testing the null hypothesis that the population mean is equal to a specified value, that is known reference mean, one uses the statistic t, the formula for which is follows. तो ये आम बुझा आमर गोटे कौन है गोटे सैंपल आम नहीं ऑलरेडी आमको गोटे मीन जना अच्छी जोटा कि आम 50 बोली नहीं 50टा ये आमर कौन हो गला आम कौन करछे आमर ये नंबर ऑफ केसेस अच्छी 36 तो ये आमको देखिबार अच्छी जोटा कि आमर सैंपल मीन अच्छी सेटा केते डिफरेंस कहा ठारू ना ये पॉपुलेशन मीन ठारू तो ये नॉल हाइपोथेसिस रो फॉर्मेशन अनुसार द पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू ए स्पेसिफाइड वैल्यू जोटा कि आमर अच्छी नोन रेफरेंस मीन तो यहाँ है तार फॉर्मूला जोठी कि आमे टी टेस्ट करके जानी परिबा हमरो केते डिफरेंस तार अच्छी तो ये फॉर्मूला है सैंपल मीन माइनस known reference mean by standard deviation जहाँ को हमें एसडी बोल लिखले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कलेक्टिव डाटा by n हला नंबर ऑफ केसेस तार रूट ओवर बुझेला एटा हला इंडिपेंडेंट वन सैंपल टी टेस्ट where s is the population standard deviation and n is the sample size बा नंबर ऑफ केसेस जहाँ को हमें कहूचे तो ये द डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज्ड इन दिस टेस्ट इज n-1 तो ये आमको चेक करने को पड़ू नॉल हाइपोथेसिसटा जोटा कि आम हाइपोथेसिस ऑलरेडी आमर गोटे अच्छी आम क्रिएट परमिशन करछंती सेठी अच्छी दैट द पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू ए स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ नोन रेफरेंस मीन तो यहाँ थिला इंडिपेंडेंट वन सैंपल टेस्ट देन देखिबा इंडिपेंडेंट टू सैंपल टेस्ट दिस is of the following three types एटा पुनी थ्री टाइप रही होची इक्वल सैंपल साइजेस इक्वल वेरिएंस एठी आमे नेचे सैंपल एठी हमरो दीटा सैंपल सेठी वन सैंपल थिला सेठी थिला वन सैंपल आउ ऑलरेडी नोन रेफरेंस मीन गोटे थिला आमे ता सहित कंपेयर करथले एठी हला दीटा सैंपल आमे आंकर मीन भितरे कंपैरिजन करिवा दिस टेस्ट इज ओनली यूज्ड व्हेन बोथ द सैंपल्स आर ऑफ द सेम साइज माने एठी जदी आमे नेचंती 6 सैंपल 6 नेचंती एठी भी 6 सैंपल नेचंती व्हेन इट कैन बी अज्यूम्ड दैट the two distribution have the same variance its formula is as follows
स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस कौन आम ऑलरेडी ये बाहर करथिले ए जिनसटा एठी ए जिनसटा को आम कहउचंती स्टैंडर्ड एरर जोटा कि अच्छी कौन आमर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कलेक्टिव डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ केसेस और द सैंपल साइज जतिकिटा सैंपल थिबो सेतिकी एटा को हमें स्टैंडर्ड एरर बोली कहउचन। तो एठी हमें एबे देखिबा स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स एटा बाहर करबा एठी यार फार्मूला हला ए टाइप रो। तो एठी टी हे जिवो m1 - m2 मीन ऑफ ग्रुप 1 माइनस मीन ऑफ ग्रुप 2 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप 1 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप 2। तो ये आम देखिले दीटा ग्रुप जेहेतु रही आम 6 नहीं गले एठी 6 नहीं गले तो ये m1 m2 आछि स्टैंडर्ड डेविएशन आसीबो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आसीबो। तो यार फॉर्मूला है गला मीन ऑफ ग्रुप 1 माइनस मीन ऑफ ग्रुप 2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स। तो यार स्टैंडर्ड डेविएशन बोथ रो बाहर कर दबा बोथ रो बाहर कला परे दीटार स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करी ताको टोटल नंबर ऑफ सैंपल रे डिवाइड कर दबा तेतले हमरो बाहर पड़िबो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स जोटा को हम एटा रे डिवाइड करिया को पड़िबो। तो एटा हला एटार फार्मूला देन अनइक्वल सैंपल साइज एटा तो इक्वल सैंपल साइज रे फार्मूलाटा हला। एबे देखिबा अनइक्वल सैंपल साइज रे कोन होची दिस टेस्ट इज यूज्ड only when it can be assumed that the two distribution have the same variance किंतु sample size unequal अच्छी सपोज गोटाकर 6 अच्छी आ गोटार 10 अच्छी आ गोटे ग्रुप रो सैंपल the t statistic to test whether the means are different can be calculated as follows। तो एठी फार्मूला कोन रहबो सेही स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स फर्स्ट बाहर करबा इंडिविजुअली बाहर जेहेतु एठी कौन होची आमर अनइक्वल सैंपल साइज रोची n समान रहुनी n1 इज नॉट इक्वल टू n2 रहुनी। तो एठी हमको अलग अलग करी बाहर करिया को पड़िबो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स तार रूट ओवर बाहर कला पर t हला मीन ऑफ ग्रुप 1 माइनस मीन ऑफ ग्रुप 2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स। देन देखिबा अनइक्वल सैंपल साइज अनइक्वल वेरिएंस भी एठी चेंज हे गला सैंपल साइज भी ऑलरेडी चेंज अछि। तो एठी कोन हबो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स फर्स्ट बाहरिबो से सेम फार्मूला रे हबो। However, the tabulated t against which the obtained t is compared in order test its significance is calculated differently using the following formula। ए जो हमें हाइपोथेसिस क्रिएट करचंदी से दीटा जाक टेस्ट करा जिवो गोटे गोटे फॉर्मूला अलगा यूज करके। तो एठी फॉर्मूला रहइबो एते क्रिटिकली हमर पड़िबनी क्वेश्चन। तो एठी देखिबा हमें एटा खाली देखिनबा ओवरलुक करनबा। तो फर्स्ट बाहरिबो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 2 देन डिफरेंट सैंपल जहाँ अच्छी ताकू से अनुसार डिग्री ऑफ फ्रीडम टाको कैलकुलेट। देन आसीबा डिपेंडेंट टी टेस्ट फॉर पेयर्ड सैंपल मीन्स कौन ना से सेम सैंपल रहिबो सैंपल सेम रहिबो 6 किंतु एंको बिफोर एंड आफ्टर एंकर ट्रीटमेंट हबो माने एबे 10 AM रे गोटे ट्रीटमेंट हेची कि बिफोर टेकिंग फूड ट्रीटमेंट हैला पुणी आफ्टर टेकिंग फूड तंकर डाटा कलेक्शन करा जियो मान ट्रीटमेंट बिफोर टेकिंग फूड गोटे डाटा कलेक्शन करा गला आफ्टर टेकिंग फूड डाटा कलेक्शन करा गला एटा हला पेयर्ड सैंपल्स। दिस टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द सैंपल्स आर डिपेंडेंट दैट इज व्हेन देयर इज ओनली वन सैंपल दैट हैज बीन टेस्टेड ट्वाइस बुझेला। एटी बिफोर आफ्टर टाइम गैप रे यांको कोन कराबो टेस्ट करे जो।
or when there are two samples that have been matched or paired as is usually done in experimental research. Its formula is as follows. Standard error of the mean baharibo, standard error of the mean. Dita mean bahar jibo, say before and after. Before mean bahar kara jibo, after mean bahar kara jibo. Then standard error of the difference between means eita baharibo. Then t ro formula say same formula re rahibo. जोठी एठी गोटे आर आसी होची, आर हैला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट स्कोर. तो सेमती टी टेस्ट रो अल्टरनेटिव्स मध्ये केते अछि, जेड टेस्ट भी अछि जोटा हमर सिलेबस रे नाही. तो एठी हमर कंप्लीट हैला टी टेस्ट जोटी की हमें मेनली देखिले गोटे सिंपल वन सैंपल डिपेंडेंट, देन टू सैंपल, देन पेयर्ड टी टेस्ट देखले. तो मेनली हमको फर्स्ट गोटे सैंपल नि आउची, वन सैंपल रे गोटे सैंपल रहउची जोटा कि हमको ताको कंपेयर करबा को पड़ुची मीन ऑफ द सैंपल विथ नोन मीन वैल्यूज. गोटे सैंपल नउचे ऑलरेडी हमर मीन वैल्यू गोटे देइची, हमें ताको कंपेयर करिया को पड़ुची. देन जेतेबेले टू सैंपल नउचे सेठी दीटा ग्रुप्स जाउचंदी. देन जेतेबेले पेयर्ड सैंपल नउचे गोटिए ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर टाइम इंटरवल रे हमें टेस्ट करूची. तो एठी हमर कंप्लीट हैला टी टेस्ट.